So let's start. So discuss essay, first of all, look at this form. This is the form of a discuss essay. How is it different from other essays? Let's discuss that so that we get more clarity. How a discuss essay is different from other essays and what do we need to do. So in discuss essay, there are two views. Like some people say something, other people say something. In agree, disagree, there are no two views. There is only one view. People say something and then they ask you, do you agree or disagree? Okay, but in a discuss essay, there will be two views. Some people are saying something, other people are saying something. You have to discuss both the views. Like if I differentiate this essay, let me make the same essay in an agree disagree essay, and you can see the difference. I want you to do that because on Saturday there was an exam, and my student messed it up badly because of this mistake. She couldn't differentiate between a discuss essay and an agree disagree essay. So like if I make a agree disagree essay for this, I would say some people believe that money should be spent on problems of human beings rather than on protection of animals. Do you agree or disagree? So first of all, I want you to tell me, are you clear? There's only one view here. There are two views here. There's only one view here. That's the difference between the two essays. This view is just saying that money should be spent on human beings, not on animals. So no one is saying that money should be spent on animals. If you look at the discussed essay, there are two views. Some people say that animals should be protected. Other people are saying, no, we should be focusing on problems of human beings. There are two different views. In an agree disagree essay, one view. I hope the difference is clear and you are able to recognize. And even if you're not able to recognize, I don't know. At the end, it's clearly says discuss both views. So it makes your job so simple. In this essay, it's going to say, do you agree or disagree? So there are no two views here. Okay, there's just one view. Okay, so now let's move on to the next part, how to attempt the discuss essay. There are three parts to a discuss essay. Discuss both views and give your opinion. Now, I try to make three body paragraphs in a discuss essay. Now, I'll cover the reason why I want to do that and why I think that is a better approach. First of all, it's my experience. I have seen students who write three body paragraphs in a discuss essay score far better. Like I've seen students scoring 7.5 and even 8 bands in one scenario. She scored an 8 band. She wrote three body paragraph. She took a three body paragraph approach. So and now I'll give the reason why, the second reason why I picked that three body paragraph approach, because I think there are three parts to a question. We should answer all the three parts. Discuss both views, the first side, the second side, and the third side. I do agree, your opinion can be matching the first side or the second side. So it'll be a repetition. And that is why I try to have an opinion which is slightly different from both the first side and the second side. ना तो मेरा ओपिनियन फर्स्ट साइड से मैच करता है, ना तो मेरा ओपिनियन कंप्लीटली सेकंड साइड से मैच करता है. मैं थोड़ा सा पार्शियल ओपिनियन देने की कोशिश करता हूँ या स्लाइटली डिफरेंट. जैसे कि इस ऐसे में बोलूँगा कि हाँ मुझे लगता है कि देखो, मुझे लगता है कि एनिमल ह्यूमन बींग्स की प्रॉब्लम पे फोकस करना चाहिए, पर इसका ये मतलब नहीं है कि एनिमल्स को निग्लेक्ट करना चाहिए. सो मेरा ये ओपिनियन आ रहा है, द फोकस शुड बी ऑन ह्यूमन बींग प्रॉब्लम्स. आई एग्री विद दैट. But I also want governments not to neglect animals because animals are also very important for us. So now see my opinion. My opinion is neither completely with the first side nor with the second side. मैं ऐसे कोशिश करता हूँ डिस्कस ऐसे में. इसका भी एक रीजन है क्योंकि फिर मेरी रेपिटेशन होने का चांस कम हो जाता है. ठीक है. नाउ आई वॉन्ट टू आस्क यू, अब तुम मेरे को पॉइंट्स बताओगे हमें क्यों पैसे खर्चने चाहिए. गवर्नमेंट्स, व्हाई शुड गवर्नमेंट स्पेंड मनी ऑन प्रोटेक्टिंग एनिमल्स? Some reasons are very simple, and I think you can answer this. Can anyone tell me why should animals be protected? To maintain the food chain. Yeah, food chain, biodiversity के लिए eco chain, they're an important part of the ecosystem. अगर वो पूरा food उनको उनके मरने से पूरा food chain disturb होता है. So good point. So we'll do that. We'll use the word ecosystem. एंड एनिमल्स के एक्सटिंक्शन से पूरा फूड चेन क्या होता है, डिस्टर्ब होता है. एंड दिस इनडायरेक्टली इम्पैक्ट्स अस टू, और इससे हमारे पे भी इम्पैक्ट पड़ता है. इट इनडायरेक्टली इम्पैक्ट्स अस एज वेल.
Okay. Okay. Next. Anyone else? Any other point? Sir, sometimes we get some byproducts from the animals. Byproducts, your direct benefits भी हैं. Like they provide us milk, medicines, बहुत सारे benefits हैं animals के, so we should protect them. Medical research में animals का काम आता है. Directly भी हमें बहुत ज़्यादा benefits हैं animals के, वो सारे benefits we can lose forever. Like for example, animals promote tourism. Like people go to countries like Kenya just to watch animals. देखो तुम सोच नहीं सकते, but tourism is also a benefit of animals. ठीक है. Then you talk about, then you talk about medical research. Animals are also needed for medical research. बहुत सारी medicines हैं वो animals के through बन रही हैं, उनके ऊपर research होती है, तो वो benefits हैं. And directly भी वो हमें बहुत सारे benefits देते हैं. They provide us leather, they provide us, milk, eggs वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें मिलते हैं. Food products बहुत सारे मिलते हैं. So you can talk about that. Directly भी हमें बहुत सारे benefits मिलते हैं, and we can lose on them forever. Lose out all these benefits. On all these benefits forever अगर ये animals extinct हो जाते हैं. ठीक है. Okay, next. Now there's one point that I don't think you can think of, so I'll tell you. Why do you think animals are dying? Animals are dying because of our actions. हमारी moral responsibility भी बनती है उनको protect करना. We are deforestation is what we are doing. हम उनके जंगलों को काट रहे हैं. वी आर डिस्ट्रॉइंग देयर हैबिटेट्स. सो मेनी एनिमल्स आर डाइंग बिकॉज ऑफ आर एक्शंस. सो इट इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट देम एज वेल. सो थर्ड पॉइंट मेरा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर मेरे कारण कुछ बुरा हो रहा है तो उसको ठीक करने की भी जिम्मेदारी मेरी बनती है. ये पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ. मेरे कारण का मतलब है यहाँ पे ह्यूमन बींग्स, लाइक एज आर द होल स्पीसीज. लाइक एनिमल्स आर डाइंग बिकॉज ऑफ आर एक्शंस. हम पेड़ों को काट रहे हैं, हम ये चीज़ें कर रहे हैं, हम फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं. एनिमल्स आर डाइंग बिकॉज ऑफ आर एक्शंस. जो डिजास्टर ज़्यादा हो रहे हैं, फ्लड ज़्यादा आ रहे हैं, वो हमारे एक्शंस के कारण आ रहे हैं. हमने पूरे कॉन्क्रिटाइजेशन कर दिए, हमने पूरी रोड्स वगैरह बना दिए, पानी नीचे जाता नहीं है, फ्लड्स आते हैं. दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ आर एक्शंस. सो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अच्छा, अब मेरे को बताओ, on the other side, which is slightly harder, why the government should concentrate more on problems of human beings. Can anyone tell me? Any point? जब भी मनी की बात हो ना, तो फंड्स की बात कर देते हैं. तो बताओ, गवर्नमेंट के पास फंड्स लिमिटेड है. So it would be unfair to spend on, जब human beings are dying, it would be very, unfair to spend on animals when human beings are dying, or human beings have so many problems like unemployment, poverty. Human beings वहाँ पे suffer कर रहे हैं. आप सोचो, कोई human being मर रहा है and there's an animal dying, और आप animal को देते हो, तो ये unfair बोलेंगे. जब human beings बहुत सारे suffer कर रहे हैं, many are dying out of poverty and lack of food shortages, due to food shortage, तो ह्यूमन बींग्स की प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज करना चाहिए. इट वुड बी अनरीजनेबल. देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड गवर्नमेंट्स हैव लिमिटेड फंड्स. मोर ओवर, इस पॉइंट को तुम एक्सपैंड करना हो तो बोलो एनिमल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स कैन बी क्वाइट एक्सपेंसिव एज वेल. पूरी की पूरी सैंक्चुरीज मेंटेन करनी पड़ती हैं. वो बहुत, उन पे बहुत एक्सपेंडिचर होता है. वैक्सीनेशन उनकी करानी, उनको अच्छे से रखना, उनका फूड का प्रोवाइड करना. इट कैन बी क्वाइट एक्सपेंसिव. गवर्नमेंट के पास लिमिटेड बजट है. That money, it would be better to spend that money on problems of human beings like poverty and unemployment and food shortages and so on. They are more urgent. Second reason मुझे लगता है, a lot of problems extinction के जो reasons हैं वो खत्म हो जाएंगे. Animals, अगर human beings ज़्यादा economically stable होंगे, people are richer and more economically stable, then ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स को भी बचाया ज़्यादा अच्छा जा सकता है. देखो, एनिमल हंटिंग होती है, क्यों होती है? पावर्टी. People hunt animals illegally because they want to make money out of it. Why do they want to make money out of it? Because they are poor. Agar human beings are not poor, they are satisfied in the first place, they would not be hunting animals. So मेरा यहाँ पे second point है कि बहुत सारे animals
ह्यूमन बींग्स को बचाने से इनडायरेक्टली हम एनिमल्स को भी बचा रहे हैं. सो दैट इज माई पॉइंट. अगर ह्यूमन बींग्स हैव अ मोर दे आर मोर इकोनॉमिकली स्टेबल, देन एनिमल्स आर ऑल्सो इनडायरेक्टली प्रोटेक्टेड. अब इसका मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दे दिया. इलीगल हंटिंग का एक मेजर रीजन है पॉवर्टी. अब तुम देखो पुअर एरियाज में होती है, यूएस जैसी कंट्री में इलीगल हंटिंग नहीं होती है, इंडिया में हो रही है. वाई आर मोर पीपल डूइंग इलीगल हंटिंग इन इंडिया और डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज? Because of shortage of funds, because of poverty. It gives them a way out of poverty. तो ये रीजन है. ठीक है. अब तुम बोलोगे बहुत रिच रिच लोग होते हैं जो स्मगलिंग कर रहे होते हैं, हंटिंग कर रहे होते हैं, वो जाके जंगलों में नहीं कर रहे होते, वो पुअर पीपल को एम्प्लॉय करते हैं हंटिंग करने के लिए. पावर्टी इज द रीजन. वो उनको थोड़े से पैसे देते हैं, बाद में बहुत कमाते हैं. दैट इज अ सेपरेट इशू. पर वो जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं उनके लिए हंटिंग वगैरह का वो काम रुक जाएगा. ओके. सो दीज आर माई 2 पॉइंट्स हियर. बिकॉज ह्यूमन बींग्स की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी तो एड्रेस होंगी तो इनडायरेक्टली वी कैन सेव एनिमल्स एज वेल. ओके. एंड सेकेंड पॉइंट, लाइक आई टोल्ड यू, के शॉर्टेज ऑफ फंड्स है. एंड बहुत सारा वो होंगे. इट विल बी मोर, इट वुड बी अनफेयर और अनरीजनेबल टू प्रोटेक्ट एनिमल्स जब ह्यूमन बींग्स आर सफरिंग और डाइंग आउट ऑफ diseases and poverty, unemployment, food shortage. That would be unfair. अब मेरा ओपिनियन आता है. मेरा ओपिनियन, माई ओपिनियन वुड बी अनदर पैराग्राफ इन विच आई वुड से कि मेरे को लगता है कि ह्यूमन गवर्नमेंट्स को ह्यूमन बींग्स की प्रॉब्लम पे फोकस करना चाहिए, बट दे शुड ऑल्सो नॉट निग्लेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, अब मैं पता क्या करूँगा, आई विल सेव वन ऑफ दीज पॉइंट्स. मैं अपने फर्स्ट पैराग्राफ में दो ही लिखूंगा. ठीक है. तो मैं यहाँ पे बोलूँगा, जैसे कि मैं बोलूँगा बहुत सारे, जैसे ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इकोसिस्टम का बोल दिया है. अब तुम यहाँ पे बोल सकते हो एनिमल्स के इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. दे प्रमोट टूरिज्म, दे आर यूज्ड इन मेडिकल रिसर्च. Directly also they provide us many food products like milk, milk, leather, eggs and so on. अगर मीट एंड इफ द एनिमल्स वो एक्सटिंक्ट होते हैं तो हमारे लिए सारे बेनिफिट्स हमेशा के लिए लूज हो जाएंगे. सो प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स शुड बी डन. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आर सर्वाइवल एज वेल. इनका प्रोटेक्शन हमारे सर्वाइवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. तो ये लिख दूंगा. और ह्यूमन बींग्स की प्रॉब्लम्स के साथ साथ इनको भी करना चाहिए फोकस. And then you conclude writing the same opinion in the conclusion paragraph कि we should protect, we और should. आवाज थोड़ी खराब आ रही है. खराब आ रही है कब से? अभी अभी थोड़ा 1 मिनट से ही सर. Okay, so um, is it better now or no? नो सर. No, worse. Okay. um, let me switch on to my phone internet. एक सेकंड के लिए you'll be disconnected. You don't need to do anything. You'll be connected back, all of you. ओके सर. ओके सर. Okay. Please tell me, is it better now? नो सर. No? नो. Okay. खराब कैसे आ रही है? डिस्टर्बेंस आ रही है? डिस्टरबेंस नहीं सर, इसी इसी यही वॉइस ना वाइब्रेट कर रही है. Okay, my voice is vibrating. यस. Let me see. Uh, okay. Let me. Can you all reconnect? Let's do that. एक बार disconnect करके reconnect कर लेते हैं. Let's all quickly do that because I don't know what other issue could be. I don't have my phone here. Okay, let's just do that. So please rejoin really quickly. We'll end the class